that t-test for you because that is going to become very relevant right now, right? So please understand this. We run a t-test to check whether the slope coefficient is statistically significant or not, right? So I had spoken of this earlier also. I'd like to speak of it again. ठीक है ना? We run a t-test to check whether the slope coefficient is different from zero, right? Why different from zero? Because if it is equal to zero, then there is no relationship between x and y. It does not matter what value x has, y will not change. So we ran a t-test and we structure the so say there's this linear regression model. So we run a t-test to check if this slope coefficient 0.85 is different from 0 or not, right? Because if it is equal to 0, then there is no relationship between x and y. It does not matter what value x1 has, y will not change, right? So the t-test is going to look something like this. The null is going to look something like this. Beta 1 equals 0, beta 1 not equal to 0. This is the alternate, right? And how do we do this test? Simple, we assume that the null is true until proven otherwise, right? We had spoken that in L1 that we use the burden of proof system to test to make hypothesis tests. So we assume that the null is true until proven otherwise. We have to provide evidence against the null and in favor of the alternate. And since we assume that the null is true, we put the null in the middle of this t distribution. We are going to put this null which says that beta 1 equals 0. So we put 0 in the middle of the distribution, right? Now we calculate the standardized test statistic of this beta 1. How do we calculate that uh, t stat, guys? It was beta 1 at minus the hypothesized value by the standard error of beta 1, right? Now this is how we calculate the standardized value of the um, test statistic, right? This is how we calculated the t stat. Now if this t stat is very far away from 0, if it is say greater than some upper cutoff, say this is t critical or some, this is the cutoff, and my t stat which I get from this equation is somewhere here, it is somewhere here, if my t stat is somewhere here, then I can conclude that the t stat is far away from 0, right? It is different from 0, so I'm going to reject the null and favor the alternate and conclude that okay, there is some relationship between x1 and y. Or if the t stat is somewhere here, if it is lower than some lower cutoff, lower critical value, right? If it is less than some lower critical value, I can conclude that the v1 is very far away from 0 and I can reject the null and favor the alternate and conclude that there is some linear relationship between x1 and y. Guys, do you remember this from level 1? ये याद है कि नहीं? Yes, sir. याद है ऐश्वर्य? हेलो?
Yes, sir. सो के उठा है? Yes, sir. गुड बॉय, सोना चाहिए। मैं भी 3 घंटे सोया मजे से। दाल मखनी, पनीर और नान खाया और मस्ती से सो। ओके, नाउ heteroscedasticity and serial correlation and multicollinearity, right? Violations of the assumptions of multiple violations of assumptions of linear regression. So the first thing that we are going to talk of is heteroscedasticity. Okay, now guys, one of the assumptions of regression is that the variance of the error terms should be constant, right? Um, so if I plot the residual plot, so this is my residual plot. Errors, so my errors are going to be on the y-axis, and the independent variable is going to be on my x-axis. Right now, um, this is my 0 because mean of error terms is 0. Right, 0 is the mean of the error term. Okay. Now, so if we plot the residuals against the independent variable, the residual plot should look something like this. Okay, so notice the error terms are within a constant range, right? Error terms are within this constant range, right? They are within this constant range. They do not deviate from this range. This is what we want, right? In linear regression, this is known as homoscedasticity, right? So regression of ours, this linear regression of ours assumes homoscedasticity. Variance of the error term should be constant, right? However, guys, when the variance of error term is not constant, we call it heteroscedasticity. Variance of the error term. Guys, I'm just coming. Just give me a second. Uh,
So heteroscedasticity variance of the error term is not constant, right? Okay, now heteroscedasticity can be of two types, guys. Heteroscedasticity can be of two types. One is unconditional and the other is conditional, right? So what is unconditional, what is conditional? Let us dive into this, right? See, in unconditional heteroscedasticity, variance of the error term is not constant. Variance of error term is not constant, right? It varies, but it does not change because of the independent variable, right? So variance of error term is not constant. It changes, but not because of the independent variable. It changes, but not because of the independent variable x1, x2, so forth, right? So variance of the error term is not constant. It is changing, but there is no relationship between the error term and the independent variable, right? There is no relationship between the error term and the independent variable. But what happens in conditional heteroscedasticity? Again, variance of error term is not constant. Variance of error term is not constant, um, and changes because of the independent variable. So there is some relationship between the independent variable and the error term when there is conditional heteroscedasticity. There is some relationship between the error term and the independent variable. So we'll write this down. There is some relationship. Now, guys, we don't want this. Why? Because our error term should be random, right? It should not have any relation with anyone. They should be completely random, right? So, if there is conditional heteroscedasticity, then you can think that okay, the randomness thing, there is some problem, right? So, conditional heteroscedasticity is going to look something like this. Conditional. Again, this is my residual plot. On the y-axis, I have errors, and on the x-axis, I have the independent variable. Okay, and
the um, plot is going to look something like. So guys, notice that the variance of the error term is increasing as the independent variable is increasing. Right? In this case, notice variance of the error term increases as independent variable x increases. So there is some relationship between the error term and the independent variable. This is an example of your conditional heteroscedasticity, right? Or it could be, so there is this funnel like shape that you can see here, or it could be the other way around. Again, this is my residual plot. On the y-axis I have errors, on the x I have the independent variable, and now my error term looks something like. Okay, so what is happening here? Notice the variance of the error term is decreasing as the independent variable increases, right? So variance of error term decreases as x increases, right? So this too is conditional heteroscedasticity, right? So the error term is related to the level of the independent variable. So we'll write this down. Error term is related to the level of independent variable. Okay, guys, are we good? Have you understood this? All okay, guys? Guys, all okay? Any doubts? Yes, sir. Okay, now the thing is that unconditional heteroscedasticity is not a problem. This is not a problem. This can be handled. But this is a red flag. This is a problem. Right? This is a very big problem. And we have to, uh, understand what problems it will create. So the biggest problem that it creates is that, and I have to hide the tool. How do you hide? हाइड कैसे करें? सर राइट क्लिक कर ठीक है, वन नोट को रिस्टार्ट. Okay, so what problems does conditional heteroscedasticity create? What problems does conditional heteroscedasticity create? Okay, so guys, remember
standard error, that is my SB1 hat, is unreliable. This can be too low or too small, right? So this here that we were speaking of, which is used to calculate the T stat, this is unreliable. This can be too low or too high. So guys, if this number is very small, SB1 is very low, if it is deflated or if it is low, then then our T stat will be big. Guys, do you agree with me? If this number is small, then our T stat will be big. Do you agree with me? Yes or no? Yes, sir. All of you agree with me? Pulkit, Aishwarya, do you agree with me? Yes, sir. So if T stat is very big, it may be bigger than this T critical. It may be this T stat may be bigger than the T critical, and we may reject the null and conclude that the slope coefficient is different from 0 when it may actually be not, right? So conditional heteroscedasticity results in standard errors which are unreliable. Standard errors could be too low or too high. If they are too low, then T stat is going to be bigger. Maybe it's going to be bigger than the T critical. We might end up rejecting the null, and we might conclude that V1 is different from 0. Uh, it is statistically significant, and there is some linear relationship between x1 and y1, when in reality it might not be the case. Guys, are we good here? Guys, are we good? Yes, sir. सबको Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है ये बात? समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? So if my SB1 is low, then my T stat is going to be bigger, maybe bigger than the T critical, right? And I may end up rejecting the null when it is true, and commit a type 1 error. याद होगा लेवल 1 से, rejecting a true null is a type 1 error. बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? गाइस कोई प्रॉब्लम है? को जल्दी बोलो. No, sir. हाँ, No, sir. ऐश्वर्य, पुलकित, मेरे को बोलो कोई प्रॉब्लम है तो. No, sir. No problem. नहीं ऐश्वर्य देखो कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, और नहीं इफ एस बी वन हाई भी तो हो सकता है. इफ स्टैंडर्ड एरर्स आर अनरिलायबल, तो एस बी वन हाई भी तो हो सकता है, लो हो सकता है, तो हाई भी हो सकता है. इन दैट केस टी स्टैट इज गोइंग टू बी स्मॉल, मे बी लेस देन टी क्रिटिकल, and we may fail to reject the null when it is false. Type 2 error. ठीक है ना? We may fail to reject a false null. Type 2 error. Right? तो फिर उसके बेसिस पे अगर अपने, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर्स अनरिलायबल है, तो हम लोग कोई भी टेस्ट करेंगे, टी टेस्ट, एफ टेस्ट,
everyone is going to be unreliable. तो ये लिखो टी टेस्ट एफ टेस्ट, अगर ये स्टैंडर्ड एरर ही गड़बड़ है तो टी टेस्ट एफ टेस्ट सब बेकार है ना। तो टी टेस्ट करके मतलब क्या है? टी टेस्ट और एफ टेस्ट ऑल्सो इज अनरिलायबल, और but there is no impact on the coefficients. स्लोप कोएफिशिएंट अगर है ना आर ओके, तो ये बीटा वन हैट ये 0.85 ये ठीक है, ये 0.85 बीटा वन ठीक है, दिस इज ओके, बट ये स्टैंडर्ड एरर सब बेकार, ठीक है ना। तो इट कुड बी इन्फ्लेटेड और डिफ्लेटेड, इट कुड बी लो और हाई। तो मेरा जो भी टी टेस्ट एफ टेस्ट होगा वो सब अनरिलायबल होगा। गाइस समझ में आया? गाइस आर वी गुड? कोई प्रॉब्लम? No, sir. अच्छा, नाउ हाउ टू डिटेक्ट दिस, हाउ टू डिटेक्ट, नेक्स्ट इज हाउ टू डिटेक्ट। क्वेश्चन कर लोगे इसके बेसिस पे, हाउ टू डिटेक्ट कंडीशनल हेट्रोस्केडास्टिक। फर्स्ट इज यू लुक एट द रेसिडुअल प्लॉट, ये रेसिडुअल प्लॉट देख लो, ये वाला ये वाला। तो if error term is related to the level of independent variable, conditional heteroscedasticity। दूसरा है ब्रूश पगान टेस्ट, तो ये समझो, ये तुमको समझना पड़ेगा। स्पेलिंग देख लेना ब्रूश पगान का, ठीक है कि नहीं। बीपी टेस्ट बोलते हैं। तो ये ब्रूश पगान टेस्ट क्या है, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो सपोज करो तुम्हारा ये है मॉडल y नॉट, y इक्वल्स बीटा नॉट प्लस बीटा वन x1 प्लस एरर टर्म, सिर्फ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। तो तुम अब क्या करता है, तुम यू एस्टिमेट बीटा नॉट एंड बीटा वन यूजिंग योर ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, वही जैसे पहले किए थे। गोल ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर इज टू मिनिमाइज योर सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स, राइट। once you calculate beta naught and beta 1, right, you can get predicted y, right, here you calculate predicted y, predicted y calculate किया and deduct predicted y from actual y to get error term, y predicted minus y, this is going to give you the error term, right। now एरर टर्म निकल गया गाइज, यहाँ तक समझ में आया? नॉर्मल रिग्रेशन चल रहा है, ये एरर टर्म निकला ना गाइज, समझ में आया? Mm. Mm. अब क्या किया कि यू रन अ सेकेंड रिग्रेशन, where what you do is you regress the squared errors with the independent variable,
तो अब एक ये करो, एरर स्क्वायर इक्वल्स बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स बीटा वन x1 plus, okay, so you run this regression, regress the squared errors against the independent variable x1. तो अब मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या बन गया, एरर स्क्वायर. Now what you will do is you will calculate the coefficient of determination of this second regression. You calculate the r square of this second regression. मतलब second regression कहाँ है, you are regressing the error squared errors against the independent variable. You calculate the r square of this regression, this second regression, this r square of this. Now if r square of this regression is close to 0, तो मैं क्या बोलूँगा, बोलो. If I regress the errors against the independent variable x1, and if the r square is close to 0, what will I interpret, bolo koi. If the r square of this second regression is close to 0, what will I interpret? Independent है, do not show relation. Can I say that the independent variable x1 does not explain the error term? क्योंकि ये सेकेंड रिग्रेशन है ना, ये सेकेंड रिग्रेशन क्यों रन कर रहे हैं अपने, टू यू नो to check whether the independent variable x1 explains the error, right? But if the r square of this second regression is close to 0, then it means that x1 does not explain the error one. X1 does not explain the errors. The independent variable does not explain the errors. समझ में आएगा ये? Why are we running this second regression? To check whether the independent variable x1 explains the error. So if the r square of this second regression is close to 0, what this means is that the independent variable does not explain the squared errors. समझ में आ रहा है guys? बोलो yes or no. Yes. सच्ची Yes, sir. सबको आ रहा है कि नहीं, प्रॉब्लम क्या है बताओ. Yes, sir. So if r square is close to 0, independent variable does not explain the error term, so we will conclude that no conditional heteroscedasticity is present. And if r square is more than 0, close to 1, फिर है, हाँ, फिर x1 explains the changes in errors. And conditional heteroscedasticity है, CH is present. If r square is close to 1, if it is more than 0, then yes, the independent variable is explaining the error square, and there is a there is this then we can say that the error term is related to the level of independent. गाइस समझ में आ रहा है तुमको? इसको एक्चुअल एक्सेल में करके दिखाऊं तुम लोगों को? गाइस Yes, sir. अच्छा, पहले मैं सारा कंप्लीट कर लेता हूँ. सो वी रन अ काई स्क्वायर टेस्ट. अपने काई स्क्वायर टेस्ट करेंगे टू चेक वेदर योर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम 0. तो काई स्क्वायर ऐसा होता है,
इसका नल हाइपोथेसिस क्या है? आर स्क्वायर इक्वल 0 एंड इसका ऑल्टरनेट है आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. इफ आर स्क्वायर इक्वल 0, नो कंडीशनल हेटेरोस्केडास्टिसिटी, एंड अगर है आर स्क्वायर इज ग्रेटर, कंडीशनल है. ठीक है, तो कंडीशनल है. देखो इतना डिटेल में वो लोग पूछेगा नहीं, मैं बस समझा रहा हूँ. ठीक है, ओके. तो if you reject the null and favor the alternate, in this case then conditional heteroscedasticity is there in the model. If you reject the null and favor the alternate, then conditional heteroscedasticity is there in the model. तो अगेन अपने chi square टेस्ट रन करेंगे. अच्छा, इसका टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या होगा? n into r square. ठीक है, n is the number of observations, r square is your coefficient of determination from the second regression, right? So the r square here we are talking of, this r square comes from the second regression. Okay, and we use the chi-square distribution to check this. Again, chi-square distribution, like the f distribution, is bounded by 0. तो वही जो सुबह बात हुई थी. ये chi-square distribution है, bounded by 0 on the left. So we never, so even though the null has a equal to sign, we never test the left tail because the left tail is close to 0. We always test the right tail, right? So we put the entire level of significance in the right tail and calculate the chi-square critical value. Chi-square critical कैसे निकलेगा? At k degree of freedom. K is the number of independent variables. ठीक है, and you put the entire level of significance in the right tail, so it's a one tail test. ठीक है, you put the entire in the right tail. ओके, तो ये तुमको एक्सेल में करके दिखाऊं क्या? हेलो गाइस, ब्रूश पगान टेस्ट करके दिखाऊं? नहीं सर, समझ गए. तुम लोग क्लियर है कि नहीं? क्या तुम लोगों को बताओ, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ. पुलकित, क्या प्रॉब्लम है? कोई है इशू? सर ये के डिग्री ऑफ फ्रीडम के नीचे क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ एफ वेरिएबल. लास्ट में आपने क्या लिखा है? वो नंबर नंबर ऑफ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. के इज द नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल. इंडिपेंडेंट. अभी बताओ क्या प्रॉब्लम है? महक, तुमको क्या प्रॉब्लम है? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर क्वेश्चन देख सकते हैं क्विकली, तो देख सकते हैं अगर वो कोई तो. क्वेश्चन देखना है.
And they will calculate the BP test activity using the data in exhibit 1 and determine whether there is evidence of heteroscedasticity. ठीक है ना? तो exhibit 1 तो निकालो. BP critical value is 11.07. तो कैसे निकालोगे टेस्ट स्टेटिस्टिक गाइस? N R square. N into R square. एन आर 96 तो into 0.6511. पॉइंट तो ये करो 96 इंटू 0.0651 कितना है? है सो 6.25. तो 6.25 है और क्रिटिकल वैल्यू है कितना 11.07. ठीक है तो मेरा 6.25 है यहाँ. ठीक है ना? दिस इज माय and this is my cutoff value 11.07. This is my critical value. So now obviously rejection area lies to the right of this critical value. ठीक है so will I reject the null? No. नो सर. No, I will not reject the null. So is conditional heteroscedasticity present? Yes, sir. No, नो सर. no, I cannot reject the null na, and Sorry, it's I not present. I cannot reject the null. If I were to able to reject the null, and if I can reject the null and favor the alternate, it's only then that conditional heteroscedasticity is there. But I can't reject the null, no, because my test statistic is less than the critical value. My test statistic does not lie in the rejection area, right? So I can't reject the null. So there is no conditional heteroscedasticity. तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. ये आंसर होगा ना 6.25. सो देर इज नो एविडेंस ऑफ हेटरोस्केडास्टिसिटी. देखो क्या यही है? 1 का बी है, 1 का बी है. सही है? सही हो गया? समझ में आया? यस सर. आ गया सर. इसी का अगला वाला बता दो. तेरे को हमेशा आगे से आगे है. सर इसके अगला ही क्वेश्चन डाला था मैंने दोपहर में. ये एक तो हो गया था. ऐसे ही आगे भागता है ये ऑलरेडी एग्जाम दे चुका है, बता नहीं रहा है. अरे मेरे चचा, तो तू उसके लिए पहले सीरियल कोरिलेशन तो करेगा कि उससे पहले ही मैं बता दूं तेरे को? ठीक है. ओके. नहीं, मैं सीरियल कोरिलेशन बताऊंगी उससे पहले ही बता दूं. हेलो. सीरियल कोरिलेशन. सीरियल कोरिलेशन के बाद ये वाला कर लेते हैं. तो एग्जाम देने से पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया करना. मतलब पढ़ने से पहले ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बैठा. तो दिस इज द ब्रॉड आइडिया. और देखो फिर एक है कि करेक्टिंग कंडीशनल हेटरोस्केडास्टिसिटी. देख लो, यूज वाइट करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स. लिख लो ये सब तुमको रट्टा लगाना पड़ेगा. यूज वाइट करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स. अब मैं इसके अंदर जाके तुम लोगों को समझाऊंगा तो तुम लोग पागल हो जाओ. लेकिन एक सेकंड, एक सेकंड. एक सेकंड.
ये तो सेकंड रिग्रेशन का होना चाहिए। तो देख लो, ये तुमको इतना कम आर स्क्वायर है, तुम देख लो आर स्क्वायर इज वेरी लो, सो एरर टर्म्स the independent variable is not explaining the error terms ना, this r square is coming from the second regression, ठीक है, ये याद रखना। This r square is coming from the second regression, so you calculate the error term of this particular regression and then um, run a second regression where you square the error terms and regress it against the independent variable. So it's not coming from this model, it's coming from the second model. ये बात को याद रखना है। ओके, मेरा बात समझ में आ रहा है? So you fail to reject the null here. Why? Because the because my test statistic does not lie in the my test statistic does not lie in the rejection area, right? Okay, so I fail to reject the null, so there is no conditional heteroscedasticity. अच्छा, अब आ जाओ सीरियल कोरिलेशन। इसके लिए अलग पेज लेते हैं, ये बहुत हो गया। महक, तेरे को समझ में आ रहा है ना? नहीं? Yes, sir. तो ये अपने को हाइपोथेसिस टेस्टिंग में रिजेक्ट करना है कि नहीं, वो तुम प्लीज एक बार लेवल 1 का फिर से देख लेना सब, वो सब क्लियर होना चाहिए। तो लास्ट टाइम है तुम लोग कॉन्ट्स कर रहे हो। ओके, सो सीरियल कोरिलेशन also known as autocorrelation. Okay, it means serial correlation or autocorrelation means that the error terms are related. In other words, errors today can predict errors tomorrow. Now what this really means that error terms have some pattern which our regression model has failed to capture. So our regression model is not so good, because our regression model should capture every pattern that is modelable, right? So that is what this means, if there is correlation between the error terms, right? Now there are two types of serial correlation: positive and negative. So positive serial correlation. Now what happens here is that a positive error today increases the chance of a positive error tomorrow, and a negative error today increases the chance of a negative error tomorrow. So it's going to look like this. So this is my again residual plot, right? So if I plot the errors, it's going to look something like this, right? Positive followed by positive and negative followed by negative, right? So this is my positive serial correlation. Most financial data you will find this positive serial correlation, right? A positive error term is followed by a positive error term, and a negative error term is followed by a negative. Then you could also have negative serial correlation, right? What happens here is that
Let me draw first. So it's going to look something like this. So positive, so this is my zero line. Positive followed by negative, uh, followed by positive, followed by negative, followed by positive, followed by negative, followed by. So negative error today increases the chance of a positive error tomorrow, and a positive error today increases the chance of a negative error tomorrow. So this is negative serial correlation, right? Guys, are we okay? समझ में आ रहा है? Are we good? Yes or no? Yes, sir. Now problems caused by your serial correlation. Again, the main problem is that regression model is missing something. So problems caused. Now we need to bifurcate those problems under two heads. First is if the independent variable is a lagged version of the dependent variable. Okay, so let me give you an example. This is an idea of auto regression. Which are we are going to discuss later. Auto regression, right? Where we are regressing the dependent variable on prior values of itself, right? So let me give you an example. Look at this model. So this model says that sales at time t equals some intercept plus some slope into sales at time t minus 1 plus some error. Like, look at this model. Again, this is a simple linear regression model where we are trying to predict the sales today using sales. We are using yesterday's sales to predict today's sales, right? In this model, we are using yesterday's sales to predict today's sales, right? So this is an example of auto regressive model. This is an AR model, right? Okay. So how would you calculate B0 and B1? Again, using the OLS method. B0 and B1 are calculated using OLS method, right? And once we've calculated beta naught and beta 1, we predict the sales. So predicted would be ST hat, right? Predicted, we always add a hat over the prediction, right? So this is my predicted sales. Okay. Now we calculate the errors, right? So you calculate the errors, which is ST predicted minus actual ST. Okay. Now what you do is you calculate the correlation between errors at time t and errors at time t minus 1, right? If there is significant correlation between errors at time t and t minus 1, then autocorrelation exists.
then serial correlation exists. Or for that matter, if there is a correlation between error at time t and error at time t minus 2, then to autocorrelation or serial correlation. If so, then to serial correlation, autocorrelation exists if there is correlation between error at time t and t minus 2. Again, you can go further, error at time t and error at time t minus 3. Okay. So you calculate the correlation between errors and their lagged values. If there is correlation, then yes, serial correlation, autocorrelation. Guys, do you want to see this in Excel? ये कैसे हो रहा है? चीज समझ आ गया तुम? हेलो गाइस, सो गए क्या? समझ आ रहा है कि नहीं? महक, पुलकित, am I सर audible? डाइजेस्ट कर हम्म, Yes, sir. क्या समझ Yes, में sir. आया? मैं तुम लोगों को थोड़ा एक्सेल में समझा देता हूँ, तुम लोगों की लाइफ इजी हो जाएगी। तो मेरे पास जैसे ये सेल्स है, ठीक है ना, इसको एक बगैर कॉपी कर लेते हैं, इधर ले आते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट सेल्स एट टाइम टी यूजिंग सेल्स एट टाइम t minus 1। तो t minus 1 में क्या है, बस पूरा लास्ट डे की सेल ले लो, ठीक है। तो 185 को 180 से रिग्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया। सो द मॉडल इज, अब इसका सिंपल रिग्रेशन कर देते हैं, ठीक है ना, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। गए डेटा, देख रहे हो ये 180 बस यहाँ आ गया, t minus 1 लास्ट डे सेल्स को अपने यहाँ ले लिए। तो अब क्या करें, ये मेरा y हो गया, ये मेरा x हो गया, राइट। y इज द सेल्स टुडे एंड x इज माय सेल्स यस्टरडे। अब इनके बीच में एक रिग्रेशन रन कर दो, सिंपल सा रिग्रेशन। डेटा टैब में आए, डेटा एनालिसिस, ओके, एक्स वाई रेंज ये ले लो और एक्स रेंज ये लो। और इसको बोलो कि भाई मेरे को यहाँ डेटा दे दो, फिर मेरे को यहाँ डेटा दे दो, ठीक है। तो अब मेरा क्या है, इंटरसेप्ट है 9.108 और स्लोप है 0.96609। तो अब मैं क्या करूँगा, प्रिडिक्टेड सेल्स निकाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मेरा आ जाएगा बाय हैट, इसको ऐसे लिख देते हैं वाई हैट, ऐसे हैट लगाना है। तो इंटरसेप्ट इसको कर दो फ्रीज प्लस स्लोप इसको भी कर दो फ्रीज इनटू यस्टरडे सेल्स, ठीक है। ये आ गया। अब तुम कैलकुलेट कर लो एरर्स। एरर क्या होगा, कॉलम सी माइनस डी, कॉलम सी माइनस कॉलम ई,
ठीक है, मतलब दिस इज y एक्चुअल एंड दिस इज y प्रिडिक्टेड। तो 185 माइनस 180, ठीक है ना। तो ये मेरा आ गया एरर्स। दिस इज द एरर एट टाइम t। अब अपने निकाल सकते हैं अब यहाँ पे निकाल लें एरर एट टाइम t माइनस 1। तो ये क्या होगा, ये होगा। फिर अपने यहाँ निकाल सकते हैं एरर एट टाइम t माइनस 2। तो अब कोरिलेशन निकाल लो एरर एट टाइम t एंड t माइनस 1। ये t माइनस 2 निकाल लो, ये है। ठीक है, नाउ यू कैलकुलेट द कोरिलेशन बिटवीन एरर एट टाइम t एंड t माइनस 1। तो कोरिलेशन between error at time t and error at time t minus 1। तो इनमें कोरिलेशन कितना है, -0.29, ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है ना। फिर अपने ऐसे निकाल ले सकते हैं, फिर कोरिलेशन निकाल लो एरर एट टाइम t एंड t माइनस 2। 0.087, तो ज़्यादा तो कोरिलेशन नहीं है ना गाइस। समझ में आया, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। यस सर। मैं क्लियर है मैं जो बताया अभी? Yes, sir. तो अब जब ऐसे केस में ऑटो कोरिलेशन होता है, इफ एरर्स एंड देयर लैग्स, जैसे ये इफ देयर इज कोरिलेशन ना बिटवीन एरर्स एंड इट्स लैग्ड वैल्यूज, तब क्या होता है, प्लीज नोट, बोथ बीटा नॉट, मतलब सॉरी, both slope coefficients and standard errors are unreliable। दोनों ही खराब है, दोनों ही बर्बाद है। both slope coefficient and this is your standard error, ये standard error है SB1, ये दोनों ही अनरिलायबल, बर्बाद है दोनों, ठीक है ना। तो ये प्लीज लिख लो, if independent variable is a lagged version of dependent variable, if the independent variable is a lagged version of the dependent variable, and if there is autocorrelation or serial correlation in error terms, that is errors at time t and t minus 1, if there is correlation between errors at time t and errors at time t minus 1, or if there is correlation between errors at any lag, then both slope coefficients and standard errors are unreliable। लिख लिया गाइस, समझ में आया? बोलो गाइस, बोलो। यस सर। Yes, sir. अब दूसरा केस, ये तो पहला प्रॉब्लम था, अब था कि अब दूसरा है कि
आज मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, इससे ज़्यादा आप लोग पागल हो जाएगा। तो इफ independent variable is not a lagged version of dependent variable. So if my model looks something like this, sales today equals beta naught plus beta 1 into say income levels plus beta 2 into say product price. So here the notice the independent variable income and price are not a lagged version of sales, right? So we are not using yesterday's sales to predict today's sales, right? The independent variables is not a lagged version of dependent. So इसमें भी अपने क्या करेंगे? We run the regression, calculate beta naught and beta 1 using OLS, predict sales, calculate errors. ठीक है? Once you've calculated the errors, we do the same thing. You calculate the correlation between errors at time t and errors at time t minus 1, right? Errors at time t and errors at time t minus 2, errors at time t and t minus 3. If correlation is there, कोई भी में भी, if error at time t and t minus 1 में कोई correlation है, then yes, serial correlation exists. अगर इसमें भी है E2 and E2 minus 2, serial correlation exists. Serial. अब कोई भी लैग पे अगर इन तीनों में से या चार बना लो, पांच बना लो, कोई भी लैग पे अगर कोरिलेशन है ना एरर टर्म्स में, तो पूरा मॉडल में प्रॉब्लम है. यहाँ पे भी यही है. इफ देर इज अ लैग एट एनी ऑफ दीज लेवल्स, देन that even if there is auto correlation at any one lag, that is good enough for the model to fall apart, right? तो अगर ऑटो कोरिलेशन सीरियल कोरिलेशन है ना, and independent variable is not a lagged version of dependent variable, so b1 is okay, slope coefficient is okay, standard error is unreliable, beta 1 is okay है. ये ऊपर वाला केस में when independent variable was a lagged version, दोनों ही बर्बाद था. स्लोप कोएफिशिएंट और स्टैंडर्ड एरर दोनों ही बर्बाद था, दोनों ही अनरिलायबल था. बट यहाँ पे क्या है? स्लोप इज ओके बट स्टैंडर्ड एरर इज unreliable when independent variable is not a lagged version of. चलो ये समझ लो, फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं. समझ में आया गाइस? ये अब हम लोग ऐश्वर्य का सेकंड क्वेश्चन करेंगे. तुम लोग को अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है क्वांट्स में? आ रहे हैं सर. महक तेरे को आ रहा है? Yes, sir. पहले से बेटर फील हो रहा है क्वांट्स के बारे में? Yes, sir. तो फिर चलो अब हम लोग ऐश्वर्य का क्वेश्चन करेंगे. हाँ, तो अब ये क्या है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर इन and its impacts on regression model A as indicated by data in exhibit 2. हाँ तो बोलो. ओ
The independent variable is lagged value of dependent variable. मॉडल ए है ना, मॉडल ए है इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अ लैग्ड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो दोनों ही बर्बाद होना चाहिए ना। अगर ऑटो कोरिलेशन है तो दोनों ही बर्बाद होना चाहिए ना। इफ सीरियल कोरिलेशन है तो मेरा स्लोप एंड स्टैंडर्ड एरर्स दोनों ही बर्बाद होना चाहिए। अब तुमको मैंने ब्रूच गॉडफ्री टेस्ट कराया नहीं है, मैं बता दूंगा तुम लोगों को बाद में, ठीक है ना। लेकिन देखो इसमें क्या होगा ना कि सीरियल कोरिलेशन होगा और मेरे ख्याल से इनवैलिड कोएफिशिएंट एस्टिमेट होगा, ठीक है ना, बिकॉज the independent variable is a lagged value of the dependent variable. We are using yesterday's sale to predict today's sale. इसका आंसर क्या है? ए है ना कि क्या है? ऐश्वर्या क्या था इसका आंसर? आंसर तो ए है। हाँ तो दोनों ही बर्बाद होगा, वो मैं डिफ्लेटेड स्टैंडर्ड एरर तुमको मैं बता दूंगा क्यों है। लेकिन इनवैलिड कोएफिशिएंट एस्टिमेट तो होना ही है, बिकॉज मतलब तुमको वो टेस्ट समझाना पड़ेगा मेरे को, ब्रूच गॉडफ्री, अभी मैं तुमको समझाया नहीं, बट इट इज कमिंग फ्रॉम दिस। डर्बन वॉटसन में नहीं अभी हुआ ना हमारा। को डरवन वॉटसन अभी करवा दूं दोनों टेस्ट, हाँ समझा दूं? करा दो सर। तो एक काम हाँ करो, 5 मिनट हम लोग ब्रेक लेते हैं, फिर दोनों टेस्ट करा दो, ठीक है? 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ओके।